Good evening, everybody. I hope you guys are doing good. Am I audible? And can you all hear me? Great. Okay. So I am Shuchi Rugta, and I'm sure you must be watching my Stocks to Watch videos. And today I am here on an ELM live session to discuss when should we trade and when can we avoid that. I think it is very important for a trader to know that how to control your emotions and to refrain yourself from not trading into the markets. And to discuss this, we have a very special mentor and guest with us, Mr. Abhijit Paul. I think, I have personally learned a lot from him. Each time I speak to him, there is some key takeaway with the conversations we have. So I'm sure this is going to be a very enriching session. And Abhijit has got, decades of experience in the market. He's a technical analyst, he's a mentor. He is been taking our technical analysis live classes. So I'm sure, let me just invite him. Right. Hi, Abhijit. Good evening. Suchi, hi, good evening. Good evening, everyone, if you can hear me. Yes, we all can hear you, Abhijit. And I'll just like to tell all my viewers here that how we intend to plan this session. So first, Sure. we'll do a quick market wrap up. How is the markets? We can simply discuss a few markets, and then we talk about simple discipline. When should we trade in the markets and when can we avoid it? What are the key things one should look? And then Yeah, we can actually take a few questions which the viewers will have, I'm sure. So I think we are good to go. sure. Um, if everyone can hear me, can I see the comments or the chat and the Yes. questions that have been asked? uh, Yes, I can see that. So I can see Nikul, Shailesh, yes, yeah. Total 99, Gamer, Jyoti, and Sujit, everyone's going. So good evening, everyone. Yes. So we got a very interesting topic that Suchi has chosen for this discussion: when not to trade. And I personally think and believe that um, what or when not to do something, to know what not to do, I think is as equally important as to know what to do. Yes. क्या नहीं करना है is I think is equally important as क्या करना चाहिए. Ji. But before that, as you were saying, we can take a look quick at the market. I guess shared my screen. Just tell me if Yeah. you're able to see my charts here. Yes, we can. अभिजीत देख Okay, सकते हैं हम. हाँ. perfect. So this is just a dual screen. I'm using TradingView here. On my left hand side, this one I have kept the weekly time frame, slightly larger time frame, and on my right hand side I've kept the one time frame smaller, which is the daily charts. This is the Nifty near month futures, which went through the expiry in today's trade. Right. Now, if you closely look at it, okay, let me just annotate a little bit. It will be easier for you to understand the parts that I'm talking about. So, see, what puzzles me, or what puzzled me, not exactly puzzle, which I find a little difficult, is this was the size and the extent of the recent bounce back. And this was the size and extent of the recent sell-off, which has essentially made the top like a V, like a reverse V. It जी. becomes really difficult in this kind of markets. अगर मैं आपको weekly charts दिखाऊं, यहाँ पे जो weekly charts है, uh, this was a classic head and shoulder. This one, this, Yes. this, this. अभिजीत अपने वॉच लिस्ट को बंद करके कैन वी शो द स्क्रीन कुड बी लिटिल I बिगर. think it आई should be थिंक a दैट little विल. larger. Yes, is that fine? Yes. Yeah, this is So, better. yeah, so coming to that point, what I find a little concerning is the market gave a phenomenal bounce back. The Hmm. size of the bounce back was around, we are looking at around 11.7%, around 12% bounce back in 20 bars. And the Yes. follow through sell off that we are going through right now, as we discussed, is around 8% in 6 days, 6 bars, 6 trading days.
So, as a trader, it becomes really difficult because which trend do you actually uh, consider? Which one do you trust? Is this the अगर ये shallow bounce back होता, you notice in a downtrend bounce backs are shallow, वो उतना उछलता नहीं है, और जब उछलता है that leads to a trend reversal. अब ये इतना अच्छा उछला, it led to such a beautiful reversal of the trend, and it completely gave away. हाँ This is not a very good sign. This is a sign wherein the bounce back was used to exit by the smart money. It was used as an exit opportunity or used as a go underweight rather than using a very strong word like exit. Equity जी में underweight जाने का एक opportunity. So I'm not very comfortable with the conditions of the market. One good thing, long term charts are still intact, long term trends are still intact. But I feel that if you take a look at the Indian equity markets Nifty in relation to US dollar, if you take a look at the performance of Nifty in relation to a safer asset class like gold, आपको top out दिखेगा, which means that don't be surprised if these lows are broken, if December lows are broken. Don't be surprised if you see market sub 16K level. It's possible. Prices will play out its role. But I will not be very surprised if I see markets at much significant lower levels from here. I do not want to sound very, very bearish right now. The only reason is the long-term charts are very strong. To जी understand this a little better, because we are looking at charts is always a good thing because we get a better perspective. If I blow out my weekly charts, if मैं सिर्फ weekly charts पे ध्यान दूं और एक structural bear market पे focus करूं, and I think a pretty good structural bear market was the 2008-9 correction. So ये futures chart है, इसीलिए इसके पहले कुछ नहीं दिख रहा है. ये 2008 का टॉप है. हाँ ये रहा इसका फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन. मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं. दिस वाज द फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन. जी यहाँ पे किसी को मतलब भनक भी नहीं होता, समझ भी नहीं होता कि हो क्या रहा है, बिकॉज इट इज सो शार्प, इट इज सो इमीडिएट, इट इज सो सच अ सरप्राइज. बट द बिगेस्ट लेग ऑफ द फॉल वाज नॉट द फर्स्ट वन. द बिगेस्ट लेग ऑफ द फॉल वाज द लास्ट वन, दिस लास्ट वन. वन तब तक बहुत डैमेज हो चुका रहता है. तब तक यहाँ पे आके चार्टिस्ट मेरे जैसे जो चार्ट्स देख के ट्रेड करते, एनालाइज करते, वो सब यहाँ पे जाके नेगेटिव बेयरिश ही बात करने वाले. बट यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड आई फील दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी आर राइट नाउ, बिकॉज long term charts are extremely strong. This is a very short term correction. Will this lead to a big correction? What I'm trying to say, the possibility is there. तो अभी हम इसको फर्स्ट लेग से कंपेयर कर सकते हैं. इसको अगर आप इसको फर्स्ट लेग माने, जो कि आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का फॉल था, आप नोटिस करेंगे कि ये फॉल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 11.7%, 12% का फॉल था. जी उस कंपैरिजन में ये फॉल ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 8% फॉल है. इनफैक्ट मैंने आई थिंक रिसेंट एक वीडियो में मैं बात भी कर रहा था कि अगर आप ये पूरा जो मार्च 20 का लो से यहां से हाँ आप अगर ऑल द वे यहां से यहां तक का हर एक करेक्शन को मापे, हर एक छोटा बड़ा कॉम्प्लेक्स सिंपल करेक्शंस को अगर आप मापेंगे, तो मोर और लेस आई थिंक वो 8 से 12% के अंदर ही आता है, दीज करेक्शंस. आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा होगा उससे, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन दिस ब्रैकेट, जो कि एग्जैक्टली हम लोग वहीं पे है. तो इसीलिए अभी बोलना बहुत मुश्किल है कि ये 12% करेक्शन और ये 8% करेक्शन आगे जाके 24% करेक्शन में रुकने वाला है. ये बोलना यहाँ पे मुश्किल है, बट पॉसिबल है. और ये पॉसिबिलिटी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई लुक एट द रिलेटिविटी in terms of the other asset classes like a currency and the bond and the gold, possibility थोड़ा सा possibility दिखता है. अच्छा, इस तरह का पॉसिबिलिटी हमें पहले दिखा है अदर एसेट क्लासेस में? बिकॉज मैंने आपसे ही सीखा है हमेशा कि
मैक्रो व्यू को लेके चलिए, खाली लाइंस ड्रॉ करने से टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट प्रिडिक्शन नहीं हो जाते हैं। सो या इस तरह का कुछ मतलब मैक्रो व्यू जो अभी दिख रहा है, आपको पहले भी दिखा था, जो द प्रीवियस करेक्शंस व्हिच वी हैड, it gives चलिए, some kind of hint that time too, so that we can get some idea about it. आपके मेरे चार्ट्स के लेफ्ट हैंड साइड में Mm-hmm. दिस इज निफ्टी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. Okay. On my right hand side, this is Nifty in terms of DXY. DXY is US dollar index, which Yes. is an index mapped with six other major currencies in the world. ठीक है? Hmm. Hmm. करंट पर्सपेक्टिव को छोड़ के, ये जो करंट मूवमेंट है, इसको छोड़ के Hmm. अगर हम लोग पास्ट में थोड़ा देखें कि प्रीवियस जो पीक्स था, हाँ. जो इंडेक्स के पीक्स थे, उस दरमियान ये रेशियो कैसा काम किया था? What was the ratio? What was the performance of Right. this ratio in those past? Hmm. So अगर हम लोग गोल्ड के बारे में बात करें, so let's blow this out. ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये वीकली चार्ट्स है, और यहाँ पे हम लोग निफ्टी एज अ बेस ऑफ गोल्ड देख रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जब हमें दिख रहा है साफ, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है. हाँ. ठीक है, आउट हाँ. परफॉर्म, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी इज आल्सो गोइंग अप, बट इट इज आउट परफॉर्मिंग. आउट परफॉर्म, रिलेटिविटी बता रही है. हाँ. रिलेटिविटी बता रहा है. यहाँ पे मैंने एक सिंपल, कुछ खास नहीं, यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे एक सिंपल एमएससीडी ड्रॉ करके बैठा. एमएससीडी दो तीन एवरेजेस के डिफरेंस को देखता है, और जी. ये आई थिंक ये 2007 है. ये 2007 का टॉप है. ये एक अच्छा खासा टॉप है 2015 का, और ये टॉप है 2018. अब एक चीज ध्यान से देखिए, हम्म. this is where the coronavirus news came out. 2020, early हम्म. 2020. This was the fall of coronavirus, but before that, if you look at this ratio, Nifty versus gold, ये गिरना चालू हो चुका. जी. इसका मतलब फ्रॉम, मैं पहला लेग को छोड़ देता हूं, यहां से अगर मैं मई 19 टू एंड ऑफ 2019, 6 महीने से निफ्टी गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहा था. मतलब पैसा धीरे धीरे सेफर हेवन की तरफ झुक रहा था, मूव हो रहा था. एक फॉल आ रहा था. दिस इज द कोरोना वायरस. राइट. दिस इज द 2007 टॉप. और ये जो एमएससीडी का डिफरेंस है, ठीक है, अगर हम इसके मैक्सिमम डिफरेंस पे ध्यान दें, तो ये रहा डिफरेंस ऑफ द मूविंग एवरेज इन 2007. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द मूविंग एवरेजेस 2015. This is the difference in 2018, and this is the difference at the current juncture. So आपको दिखेगा very clearly that these levels are more or less similar. मतलब ये जब एक certain threshold से निकल जाता है ऊपर की तरफ, निफ्टी धीरे धीरे tends to become unattractive in relation to gold. ठीक उसका ऑपोजिट नीचे की तरफ है, यहाँ पे, where the asset class equity becomes so cheap because price इतना घट चुका होता है, relatively cheap दिखना चालू हो जाता है, and so equity becomes more attractive in relationship to gold. These are very cyclical in nature, these concepts. So इसीलिए मैं यही फोकस कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मुझे आज के तारीख में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और मुझे जो दिख रहा है, very okay. Well, number one, it is an extreme reading. These readings are extreme. And number two, very early signs of this correction. अब एक चीज अपने को समझना चाहिए, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है और ये जो रेशियोज है, जो रिलेशनशिप्स है, इससे हम अपना एंट्री एग्जिट टाइम नहीं कर पाते, बिकॉज उसमें हमेशा एक लैग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जूम इन, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इफ यू नोटिस हियर, वेयर इन दिस वाज द मैक्सिमम स्प्रेड, द मैक्सिमम डिफरेंस, यहाँ पे इट डिड लीड टू अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, बट यहाँ पे भी मैं उतना ही प्रोबेबली बेयरिश साउंड करता जी यहाँ पे, बिकॉज रीडिंग्स वही बता रहा है, बट द करेक्शन वाज शैलो. फिर वो यहां तक लेके गया और फिर जाके एक अच्छा खासा 12% और अभी 8% का करेक्शन है.
और यहाँ पे भी रीडिंग प्रिटी हाई है. The behavior of the indicators are reflecting weakness. Momentum has come down. But all these, Suchi, all these are a function of price. प्राइस राइट. का स्तर अगर घूम गया और एक महीने बाद अगर प्राइस यहाँ से 20% ऊपर चला गया, ये सब लेवल्स, एक्सट्रीम चेंज हो लेवल्स, जाए. सब घूम जाएगा. So we can use this to have an understanding and go underweight, overweight. जब ऐसे सिचुएशंस होता है, ऐसा नहीं कि आप इक्विटी बेच के निकल जाएंगे. आप इक्विटी से थोड़ा रहेंगे, बट अपना जो गाड़ी का गियर है उसको फोर्थ गियर से सेकंड गियर में लेके आएंगे. राइट. आपका बिकॉज या क्योंकि यस प्लीज. मोस्टली या बिकॉज मोस्टली लोगों में ये रहता है कि अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बेच के गोल्ड खरीद ले इसके बदले. बट राइट. इंस्टेड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि आप अपना वेटेज को डिवाइड कंसिडर कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो का एसेट क्लासेस को रीवैल्यू कर लीजिए. करेक्ट. यस, बिकॉज टाइम करना मार्केट को इज नॉट एन इजी थिंग. अब आई कैन यूज अ वर्ड के इट इज इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट. बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाएंगे, या कभी कभार आप कर लेंगे. एक टूटा हुआ घड़ी भी दिन में दो वक्त दो टाइम सही वक्त दे ही देता है. सो इफ आई कीप ऑन सेइंग मार्केट विल फॉल फॉल, कभी ना कभी तो गिरेगा, और तब मैं बोलूंगा देखा मैंने बताया था. सो एंड देयर आर पीपल लाइक दिस बाय द वे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज these things help us to create a macro over a broader perspective. And this is ideal for someone जो एसेट क्लास समझता है, इक्विटी समझता है, इक्विटी का जो गोल्ड के साथ या कमोडिटीज के साथ या करेंसी के साथ या रियल एस्टेट के साथ जो डिफरेंस है वो समझता है, और जो अपने पोर्टफोलियो को 4-5 भाग में बांट चुका है. स्लाइटली लार्जर व्यू पॉइंट, ना कि अगर ये सब छोड़िए कल कौन सा स्टॉक लेना है बताइए जो भागने वाला. दैट्स अ वेरी वेरी माइक्रो पर्सपेक्टिव. हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, इट्स अ लिटिल बिगर पर्सपेक्टिव, अ सीरियस पर्सपेक्टिव, अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. राइट. अभिजीत, बीच में क्वेश्चन लूंगी क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बाय निकुल सोनी, that when we talk about revaluing, are we considering simply the relative strength of the asset class, or are we talking about other macros also? So यहाँ पे because Nikul, I am primarily trying to understand, judge by charts, which is price. We are considering relative strength. Relative strength को calculate करने के लिए there are 3-4 various ways. We can take a ratio chart. यहाँ पे ratio chart है. We can take a relative strength indicator also, जो same चीज का करके देगा. Essentially numerator divided by the denominator. जी. That's exactly what we're looking at here. Right. So, Abhijit, फिर अपने we've discussed the macro view of the market, and then it boils down to the same question जो कि आज का टॉपिक है कि फिर एज एन ट्रेडर उसे कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं ट्रेड करना चाहिए, what will be his action, because he will always be in that fallacy mode कि probably यहाँ से अगर 20% ऊपर चला गया प्राइस तो वो वापस उसकी वो स्टैंस बदल जाएगी. जी. Yes, because stock market is a big function of the sentiment. Stock market चलता ही है overall sentiment के ऊपर. जी. IPOs और शादियां बुल मार्केट में ज्यादा होती है. IPOs और divorce bear markets में ज्यादा होते हैं. The second part was a joke. The first part was serious. When not to trade. Okay, let's talk about when not to trade. I feel when not to trade can broadly be divided into two parts. इंटरनल कॉल, एक्सटर्नल कॉल. एक एक करके समझते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि आपको सबसे जोर का फटका, सबसे जोर का लॉस, धक्का तब लगता है जब आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना का एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल स्प्री से गए हो. बिकॉज जब आप धीरे धीरे प्रॉफिट्स कमाना स्टार्ट करते हो, आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आप 1 लॉट ट्रेड कर रहे थे, अभी आप 2-3 का बात कर रहे हो. पहले 10 करते थे, 15, 20, 50 का बात करते हो. सो यू स्केल अप, एंड तब जाके वो धक्का आता है. इफ यू अग्री टू दिस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन इंटरनल कॉल इज कब
लीश को खींच के रखना है। मतलब इफ आई हैड अ वेरी गुड वीक, वेरी गुड मंथ, वेरी गुड क्वार्टर, देन नेक्स्ट क्वार्टर में हाई चांस है कि मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, विच इज द म्यूचुअल फंड विच इज गिविंग द बेस्ट रिटर्न्स ओवर द लास्ट 3 years। उसके राइट। बेसिस पे 5 स्टार देख के वो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं। बट ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द टाइम यही फंड्स नेक्स्ट 3 साल में आउट परफॉर्मर नहीं। के लिस्ट में नहीं रहने वाला है। यप। These are cyclical things. So राइट। internal is कब नहीं ट्रेड करना है या कम ट्रेड करना है। दो टाइम है, जब आपका बल्ला बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब यू आर इन गोइंग वेरी गुड प्रॉफिट्स, और जब आपका बल्ला बहुत खराब चल रहा है, यू आर इन अ बैड स्प्री एंड यू मेकिंग लॉसेस। दैट इज वेयर यू स्लो डाउन। आप जो भी टेक्निकल्स या ट्रेडिंग को लेके कोर्स या बुक्स इफ यू रीड, एवरीवन टॉक्स अबाउट कम ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड्स कीजिए जब आपका लॉस हो रहा है। हाँ। कोई आपको नहीं बताता है कि छोटे छोटे ट्रेड्स कीजिए जब आपका प्रॉफिट भी हो रहा है। सो यू शुड हैव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड कि अगर निफ्टी सीएजीआर लास्ट 25 साल का 13% है और मुझे 20% एक क्वार्टर में मिल जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको कंसिस्टेंसी को रखने का, मतलब टू सेव माय प्रॉफिट्स रादर देन टू गिव अवे। कितनी बार आपने सुना होगा कि सर 6 महीना कमाते हैं, एक हफ्ते में चला जाता है। इट्स अ वेरी जी। वेरी कॉमन। जी। 6 महीने का कमाई अगर आप एक हफ्ते में या एक दिन में या 2 दिन में गवा देते हो, मीन्स आपको कमाना आता है, आपको पकड़ के रखना नहीं आता। यू डोंट नो हाउ टू सस्टेन इट, यू नो हाउ टू अर्न इट। एंड इन द मार्केट अर्निंग इज नॉट डिफिकल्ट। आई थिंक sustaining is probably 10 times more difficult than earning, because out of 10 examples 9 will be sir कमा तो लिए थे but रख नहीं पाए। So internal call is kab, when you go slow, when you trade less, when you don't trade, is either you're in a bad patch or you've gone through a recent exceptionally good patch. Now ये bad patch and good patch का definition मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन it has to be benchmark। So आप निफ्टी को benchmark लीजिए। निफ्टी सीएजीआर अगर 25 साल का 13-14% है, तो आप समझ लीजिए that if the Nifty, if the market has gone up 28%, 25%, 30%, this is the time up you will trade, but this is where you will trade less। बोलना easy है, होता नहीं है। It will not work because तब sentiment, confidence, media news इतना जोर शोर से ढोल बजाते कि आपको ये सब समझ गए, they are completely out of the wind। सो अभिजीत, इसका मतलब ये है कि सपोज इफ वी आर डूइंग वेरी वेल, पिछले 2 महीने 3 महीने या एक साल में हमने बहुत अच्छा काम किया, उसके हम्म। बाद इफ वी वांट टू रियली स्लो डाउन एज पर से, या तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारा से पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हम अगर फॉलो कर रहे हैं और या हम पर्टिकुलर मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो या उसमें हम अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें जितनी हम ट्रेड कर रहे हैं, कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड हम रिड्यूस कर दें। frequency of trade reduce करना for a trader is very difficult। The moment you become a trader, in one day if you don't trade, आपको कुछ अजीब सा लगेगा। जी। In my classes I used to say, I used to use the word H and खुजली जैसा, मतलब कुछ हो रहा है यार, मतलब why am I not doing anything, right? So telling a trader trade मत करो, वो गोली मार देगा मुझे या गाली देगा मुझे। बट टेलिंग अ ट्रेडर ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड लेस, कम करो, सो इट विल सैचुएट हिम। ही विल फील कि हाँ कुछ तो कर रहा हूं, बट ही हैज दैट इंटेलिजेंस ओवर हिज कंपल्शन दैट दिस इज नॉट द राइट मार्केट टू ट्रेड हेवीली। In fact, this is the market where I trade. I trade because I want to stay in the game. I need that adrenaline. I need that feeling. Trade करने से लगता है हाँ कुछ किया, but you trade less so that you make less because already आप कमा चुके हो ना, you've made a decent. So यहाँ से अगर कुछ बनता भी है तो it will only improve. But if it goes down, now understand the logic behind this. Don't trust what I'm saying. Have you heard? Have you experienced? 6 महीने का कमाई 6 दिन में चला जाता है। Have you जी, experienced this? सुना You है, ask anyone, एक्सपीरियंस है, सब कुछ। 99% you'll see this। So if I go back, if I take all of them and take them to the point where they were at the peak, just वो लॉस के ठीक पहले,
एंड इफ आई टेल देम भाई 2 दिन में आपका पूरा 6 महीने का कमाई जाने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इफ यू ट्रस्ट मी, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, यस और नहीं तो ट्रेड करूंगा, छोटा ट्रेड करूंगा जिससे लॉस कम। जी So you don't need me to tell you this. Past experience of yourself and past experience of all the fools around you suggests you to use a little bit of intelligence. अभिजीत, ये कैसे डिसाइड करें कि मैंने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर अच्छा किया था? हाउ डू वी एक्चुअली एस्टैब्लिश अ थ्रेशोल्ड? बिकॉज हम तो हमेशा ऊपर की तरफ ही देखते हैं, ग्रोथ ही सोचते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हाँ हमने लास्ट हफ्ते या लास्ट महीने अच्छा काम किया? This has to be in relation to the market. बिकॉज यस एक चीज है, आप जितना भी कुछ उखाड़ लीजिए, जितना भी पढ़ लीजिए, कर लीजिए, आपका कमाई तभी होगा जब मार्केट आपको सपोर्ट करेगा, मोस्ट ऑफ जी द मोस्ट ऑफ द टाइम। यस ट्रू इवन फॉर अ ट्रेडर लाइक मी जो फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट जाता है, मैं शॉर्ट में तभी कमा पाऊंगा जब मुझे शॉर्ट में मूवमेंट मिलेगा। So I feel 80% of the reason why my trades make money is because I was in line with the market. मार्केट चला इसीलिए मैंने कमाया। बाकी का जो मेरा सबर था, पेशेंस था, करेज था, कमिटमेंट था, that I played out and market. That's so if you try that you'll become the best trader and you'll study everything, कुछ नहीं होने वाला है until and unless you're on the right side of the market. So how do you judge that this profit that you've made is enough and now you should slow down? I think you should use a threshold. Threshold in terms of past historical market performance, as I said, साल में सालाना लास्ट 25 साल में निफ्टी का एवरेज रहा है 13, 14, 15, 12 to 15%। उसका डबल ले लीजिए, उसका डबल ले लीजिए। इफ यू मेक 30 to 40%, you're फाइन। अब कोशिश कीजिए कि इस 40% को 25% ना हो जाए, 10% ना हो जाए, माइनस में चला जाए। सो सोचिए अगर 6 महीने में आपको 40% रिटर्न्स दिखता है एंड एंड ऑफ द 6 months इफ आई टेल यू 40-30 रहेगा या 40-10 हो जाएगा, आप क्या चूज करेंगे? 30। So you will always want a smaller loss than a larger loss. So try to keep it. So the moment the market gives you twice or you have already made twice the threshold, don't stop because who knows, there are further upsides. right Try to slow down. This is an internal calling. ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, when to trade, when not to trade and slow down. This is an internal call, especially after you've done very good or done very bad. The external call is the market will tell you. जो condition में आज के तारीख में हम लोग हैं, when the underlying volatility of the market spikes up, when all of a sudden जो निफ्टी 100-150 पॉइंट में घूमता था वो 350, 400, 500 पॉइंट में के रेंज में घूम रहा है, देन आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस इज फेनोमेनली हाई। आप लॉन्ग करे या शॉर्ट करे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर स्टॉप्स गेटिंग हाई is highly there, correct? So the external call is जब आपको clearly दिख रहा है that the current volatility of the market has spiked up, right and ये बाजार वैसा नहीं है जब आपका विक्स उछल चुका है and etc. Then you know this is not the time to trade. The best time to trade is when the market is giving us a very good deciding trend. मैंने आपको निफ्टी का वीकली चार्ट्स दिखाया था, 2007 का क्रैश, पर आप ये नोटिस किया था कि सितंबर अक्टूबर का जो फॉल था उसमें सबसे बेहतरीन पैसा बनता, तब तक मार्केट ऑलरेडी घट चुका है। इफ यू वांट मी टू शो दिस टू यू वंस मोर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू is the best thing to do is wait for the trend to develop. अगर आपको लगता है this is 2000, this is 2008. So you would have noticed that, okay, this is the difference. This is the difference between Nifty and gold. I will show you the chart of Nifty weekly, only Nifty, not the ratio, because ratio will not give you a clear picture. ये रहा. This is the chart of Nifty, and then if you notice, this was the top, this was the 11 days fall. इसमें आप don't try to make money here. It's very difficult. Only those who have some understanding, expertise, and आप यहाँ कोशिश कीजिए ना बनाने का, आप यहाँ कोशिश कीजिए, because तब तक तो बहुत कुछ
झुक चुका है, the market has turned down. So Right. wait for the trend to develop, trade in line with the trend, and when the market goes volatile, like the current condition, अब देखिए 20th December we were dealing with 16,600. Hmm. Today is 28th, 7th of Jan. So almost a month's time, the index has gone up 12% and corrected almost 9%. This is too Yes. much for a non-professional to handle. Even for a professional, this is this is The not easy. volatility has been crazy. Yes. I mean, Yeah. So if it rises, volatility is like a ladder. Volatility is like an opportunity. Volatility में जितना easily बनता है उतना इजीली टूटता भी है. जी. मेरा सजेशन रहेगा कि हम और आप हाई फंडा म्यूचुअल फंड्स या हेज फंड्स या बिग रिस्क टेकर्स नहीं है. एटलीस्ट आई एम नॉट, Hmm. बिकॉज व्हाट आई ट्रेड इज माय हार्ड अर्नड with blood, sweat, money saved, right? Right. And so I don't want to lose a significant part of my portfolio. I can make a little bit is fine. I know Hmm. कि क्या अपना टाइम आएगा. So Hmm. when my time comes, I'll make up, but I don't want to see my portfolio down significantly. And so when the market goes extremely volatile, it's always important for you and I to be sensible. Keep on trading, but trade less. I know many people who completely stop trading. Hmm. कि we are not looking at it. I look at it after some time. जब ये सब सुधर जाएगा, जब Hmm. average historical volatility will slow down, VIX will come Hmm. down, and etc. 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 So So wait for the Abhijit, right. hmm. या सो अभिजीत, अगर हम इसको स्पेशल एक्शनेबल्स या कंक्लूड करें इस पॉइंट को, तो एक तो हो गई हमारी इंटरनल कॉलिंग जो अपने थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं. सेकंड, Yeah. अगर हम मैक्रो व्यू मार्केट्स को बेस्ड ऑन द मार्केट्स वी डिसाइड द एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो प्रॉब्ली कैन वी से कि एक बिक्स को देख लिए, अपने एक ओवरऑल मार्केट ट्रेंड हम लोग देख लिए, और कोई पैरामीटर्स है जो विच विल हेल्प a trader decide ki this is a cautious, probably events like budget, fed meet, elections, all of these events are coming up, so it is a sign that आप थम जाइए, थोड़ा कम हो जाइए, मतलब can we say something like this? Yes, see, one thing are one-off events which comes once in a month or once in a year, like a budget. Yeah. वो सिर्फ आपको आग में घी देता है और कुछ नहीं. Hmm. So a budget and whatever comes out of it can lead to a knee-jerk reaction on the downside, can lead to a spurt on the upside, etc. Hmm. But general trend of the asset class, general trend is already there. ठीक है. हाँ, अगर आप सबका सुनेंगे, then the chances of you getting confused is very very high. Hmm. Correct. So, if you listen to too many market experts, technicals will say something else, fundamentals will say something else. Mutual funds कभी negative बोलेंगे ही नहीं, because उनका पैसा ही बनता है upside market में. कैसे negative बोलेंगे? ऐसे नहीं. मेरा और आपका बच्चा सबसे sweet है, सबसे अच्छा है ना? So if I'm a mutual fund manager, how can I talk negative about them? I can say cautious about the market. I will not say negative because that's my bread and butter. So एक ओवरऑल सेंस, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहना जरूरी है. डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, डोंट ट्राई टू शो एनीवन कि मैंने कितनी अच्छी टाइम किया. बट as we are talking this out, कब लीश को खींचना है, मीन्स कब फोर्थ गियर से थर्ड गियर या सेकंड गियर आना, और कब अचानक से सेकंड गियर से फोर्थ गियर जाना. Hmm. रास्ता खाली है, रास्ता अच्छा है, चलो स्पीड बढ़ाते हैं. रास्ता अच्छा नहीं है, छोटा सा लेन है, स्पीड घटाते. Basic. I'm not talking about any hi-fi stuff. So Hmm. yes, this is a very important thing. You can look at various uh, Nifty PE is one. It's one indicator based on which there are various mutual funds. Many fundamental guys actually switch their debt and equity on this. अगर आप बेसिक इन्वेस्टर है और ये सब बात आपको समझ में नहीं आता है, या अगर समझ में आता है आपके पास टाइम या एफर्ट नहीं है, there are so many mutual funds, they call it a dynamic asset allocator. ये क्या करते हैं?
जब निफ्टी पीई ओवरहीटेड होता है, इक्विटी एक्सपोजर घटा देते, डेट एक्सपोजर बढ़ा देते ऑटोमेटिकली। इट्स लाइक मैं अपना निफ्टी पोजीशन या एक इक्विटी पोजीशन को घटा के उस पैसे का डेट खरीद रहा हूँ या एफडी खरीद रहा हूँ या टी बिल्स वट एवर। आपको करने का जरूरत दरकार नहीं है, द म्यूचुअल फंड इज डूइंग फॉर यू। सो उतना क्यों दिमाग लगाने का, पुट इट इन अ डायनामिक एसेट एलोकेटर एंड भूल जाइए। I will do it myself because this is my industry. This is what I've been doing for 17 years. So अगर 17 18 years एक फील्ड में रहने के बाद मैं म्यूचुअल फंड को दूं करने के लिए, so I am probably thinking of something else in my lifetime, which I'm not. So for you, it's completely okay. So look at a Nifty P. You can look at, see, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हर एक फॉल के पीछे एक 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 रीजन, एक ट्रेंड, एक ट्रिगर। मीडिया एक मसाला रहता है। कभी वो इन्फ्लेशन हो, कभी वो राइजिंग प्राइस ऑफ क्रूड हो, कभी वो इन्फ्लेशन ऑफ द यूएस मार्केट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज इन द यूएस। सो एवरी फॉल नीड्स अ रीजन, स्पेशली द फॉल। जब मार्केट ऊपर जाता है, पीपल डोंट आस्क सो मच क्वेश्चंस। जब मार्च 23 2020 से मार्केट डबल हो गया, नो वन आस्क सो मेनी क्वेश्चन, अरे डबल कैसे हुआ, वैल्यूएशन तो डजंट मेक सेंस, बाहर तो प्लेन्स कोई चढ़ नहीं रहा है, यू अंडरस्टैंड, नो वन आस्क सच अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टार्ट्स टू कम जब आपका तबीयत खराब है, व्हेन द मार्केट कम्स डाउन। सो निफ्टी पी इज वन, इन्फ्लेशन इज वन, क्रूड इज वन। ज्यादा देखने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे जी। कम रखिए लेकिन प्रॉपरली yes रखिए। Less is always yes more, as per you say always. As you say yes always. yes 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 अभिजीत, एक चीज और बताइए यहाँ कि जैसे हम बोल रहे हैं कि आप कम ट्रेड करिए, तो लोग इसको सोच रहे हैं कि कम ट्रेड करें लॉन्ग साइड में। नाउ बट व्हेन द ट्रेंड जी इज चेंज probably and yeah you know when a trader wants to play short, तो वहां पे भी वो थोड़ा डिफेंसिव एक्ट करेगा कि वो अग्रेसिवली शॉर्ट जा सकते हैं, because the trend is changing, and especially when the markets go down you make faster money in case if you're in the right side of the trend. It always falls faster than it goes up. So Yes. So, trading long and short, both sides of the market with the same consistency is not easy. Generally, we are all long biased. yes. Generally, equity as an asset class is long biased. Rallies are far larger than the sell offs. Indian equity markets are primarily driven by your institutions, and these institutions cannot short. So they always love to buy at dips and corrections like this. So जो एसेट क्लास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो लॉन्ग बायस्ड है, जिसमें ऊपर मतलब नीचे के भाव में खरीद के ऊपर के भाव में बेचना, लॉन्ग जाके कमाने का चांस एंड पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज बेटर। दैट्स व्हाई इफ यू टॉक टू 100 पीपल, 90% विल हैव अ लॉन्ग बायस। उनको नीचे में वो they're not able to do it. I'm a mentor, so I know, I speak to a lot of people. Right. It's a thing कि सर मैं शॉर्ट नहीं करता बिकॉज मुझे बैठता नहीं है दिमाग। Now, if you try to go short and make money in a falling market, it's possible, highly possible. It will highly likely to give you returns very quickly. सिर्फ एक चीज and very simple thing, please remember that a downtrend of any asset class, mainly equity, is highly volatile in relation to an uptrend. Matlab, when markets go up, they go up slow and steady. If you want to see any charts, you'll find any uptrend slow and steady jata hai. But वो जब टूटता है, so now that you're showing my screen, this is Yeah. Nifty. So you will see, आपको कोई टेक्निकल्स या कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, just simple eyeball. If just notice the rise from this to this, steady. Look at Steady the correction here, fall. right? Yeah, falls, downtrends, especially downtrending markets are far more volatile. यहाँ पे Yeah. देखिए, यहाँ पे देखिए, जब ये टूट रहा था, this bounce back, fall, bounce back, fall, bounce back, fall, bounce. The way it was falling, and look at here the way it is rising. There's barely any correction. यहाँ पे कोई correction आपको दिखता ही नहीं है. Uptrends
जब मार्केट एक सर्टेन अप ट्रेंड पकड़ लेता है, then the corrections are generally shallow. Uptrends are less volatile. Volatility in uptrends, structural uptrends is less. Volatility in structural downtrends is always very high. इसका मतलब I'm gone short, the market is falling. ये जो bounce back आने वाला है ना, they are sharp. So please, आपको you have to be very agile, very shrewd, very disciplined, etc. etc. ऐसा नहीं मैं shorts पे बैठा ही हूँ तो बैठा ही रहूंगा next month to month. Very You fast. need to book out of your shorts very fast. Yes, yes. Okay. So I think that was a great insight. We've got actionable ideas कि कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे आप डिसाइड करेंगे, क्या क्या चीजें को आप प्रायोरिटाइज करेंगे टू टेक दैट डिसीजन. And I think that Yes. will help you evolve as a better trader and a better market participant per se to retain what you have done all this time. Retailing is very important. Very Yeah, important. retain is very important. So I would like to take a few questions from the audience now, in case you all can shoot your questions. I think I missed one question. Huh. So there was a question by Mr. Harman कि हम position को reduce कैसे करें? How do, is there a structured way to reduce your position sizing? सिंपल है, डिपेंड करता है आप पोजीशन साइजिंग कैसे कर रहे हो. आइदर Hmm. आप वैल्यू बेस्ड कर रहे हो या रिस्क बेस्ड कर रहे हो. मतलब आपका जो भी पोजीशन है, लेट्स से एट दिस डेट यू आर टेकिंग वैल्यू ऑफ 1 लाख. आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल कि हाँ. मैं जो भी स्टॉक खरीदूं, 10 रुपए का स्टॉक हो या 1000 रुपए का स्टॉक हो, मैं वैल्यू को 1 लाख ही रखने वाला हूं. This is an approach of value. All my trades are of the same value. Is that Hmm. okay? Then whatever is the value, you reduce the value, make it Perfect. 75%, 70%, 50%. The Perfect. idea is to go slow. And if the volatility keeps on keeping high, you stay low. Then धीरे धीरे when the market structures itself, then you scale up. इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी फॉल एवरी राइज ऑफ द मार्केट इज वेरी डिफरेंट. ये जो करंट मार्केट है, व्हेन विल इट स्टेबलाइज एंड व्हेन विल इट पिक अप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. So one is, if it's a value based approach of your trades, reduce the value. Second, people like me, we do the risk based approach. हर 100 सौदे में let's say 1 लाख का loss, risk of 1 लाख rupees. So if my trade goes wrong, I lose 1 lakh rupees. So what do? I reduce the risk. In both the cases, if it's a value approach or a risk approach, essentially your quantity that you're going to trade will come down. Yeah. It becomes particularly difficult for a low capital futures market trade. सोचिए मेरा 10 लाख का कैपिटल है, मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी रहना मुश्किल होगा. इन दैट केस ETFs or देखिए, the moment you go to ETF or cash market, your capital is blocked. But in any case, if it's value or risk, reduce it. And I think it is a very personal way to do it. Every trader has their own personal way to do it. Right. Means I had my share of good times as a mentor, when they come and tell me that I have learned a lot and I'm trading and I'm doing good profits, etc. And I keep on asking them questions. Tell me about your story, your journey up. How are you doing good, etc., etc. And I've noticed one thing, that सब कोई अपना अपना एक एंगल लगाता है. दे ऑल हैव देयर ओन यूनिकनेस. You cannot just copy paste someone's portfolio or style. It will जी. not suit you. So yes, learn, execute, relearn, try to gain some expertise. But आप देखेंगे कि धीरे धीरे you will definitely include आपका खुद का एक यूनिकनेस इन योर ट्रेड. वो यूनिकनेस आपके पर्सनालिटी से आएगा. अभिजीत, शुभम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ही इज एन इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर and he जी, keeps his stop loss to 1% of his portfolio value. So या is that 1% threshold fine, or परफेक्ट.
Yeah, because his 1% threshold for 1 to 2%. The max you should go is 2. The very good starting point is 1. So 1 to 2% is fine. 1% is completely okay. You should also know that how much percentage is your worst case scenario. Means आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है और हर एक ट्रेड पे आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो. सो आपको 100 गलत ट्रेड्स करने हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा. इज दैट ओके? जी जी सो ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, हाउ मच टोटल अमाउंट यू आर विलिंग टू लूज, ये कितना है? 10 है, 15 है, 20 है? ट्राई टू कीप इट 20 to 30%. सी द मोमेंट someone starts to consider trading investment as a business rather than adrenaline, roller coaster, fun, money, show off, multiple screens. The moment you start to consider it as a business, आपका खुद का perspective will start to change. right Because when you start a shop or a business or anything, you try to improve the service that you're giving. You try to improve the product that you're selling. right If your product is good, it will get you money. So in trading, everyone wants to make money, but no one wants to become a good trader. No one wants to do the hard job. So try to think from the perspective of a business. Then you will see कि हर एक business bench means हर एक business break even करने में 2-3 साल लग जाते हैं. और drawdowns आप भी आते हैं. हाँ, और आप तो पहले मंथ से ही प्रॉफिट चाहिए. आपका ब्रोकिंग अकाउंट खुल गया, एवरी मंथ यू वांट. So on Yeah. a serious note, very serious note, those who are listening to us today evening, and we all join the markets to make money. इसमें कोई second thoughts नहीं. Of course. But whatever 1% of the risk Shubham is taking, if he considers his entire capital, it can be as small as 5 lakhs or 2 lakhs or 10 lakhs or 10 crores. Doesn't matter. Right. You are in a business. You're looking to generate returns from this business. The moment you start to think that way, na 100%, 200%, 15% every month, ये सब अनाप शनाप things will go out of your head. Then you will think straight, sensible. You'll act sensible. I hope so. I hope Yes. so. I would like to tell all my viewers here, Abhijit, that you have been fantastic and you've hosted so many webinars. We've got a course by you, which is Art and Science of Trading Online Technical Analysis by Elearn Markets and NSE Academy, where you mentor the students, and the journey is fabulous. The students, it's, I would actually call them career courses, that you do that course and yes, your career is sorted. And we have, because you are doing this live, we do have a special offer for all of them today who is doing this is SR40 code. If they can use, they get a 40% discount on all webinars. And if they use the SR15 code, you can see it on the ticker also below the video. They get a 15% discount on that live video, and it is applicable till 31st of January. So I will request everybody just to log into eLearn Markets, have a look in case you want to expertise on a specific topic on technical analysis, whether it is moving average, whether it is RSI. I think you've done 12 webinars with us. 14 webinars. 14 webinars, my God, 14 webinars, and our standard AST program. I think all our viewers should know about it. So please do utilize this opportunity of this discount SR40 or SR15 and sort your career. I think that is what I would like to tell them. So we have a question by Radhe Lal Koram, Abhijit, that Yeah. can we actually figure out the early signs of bubble burst? I think Yeah, yes, of course. जब आपको कतरीना कैफ और आलिया भट्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज में ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, you know it's something wrong. I'll take you, I don't have much time, but I'll take you back to my early days 2004-5. तब के टाइम पे
अगर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज में निफ्टी 5000 बोल्ड मोटा करके अगर आता था, मतलब पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड, मतलब आसपास कहीं टॉप है। जब जिसको आप जानते हो, जिसको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक से बोलता है, अरे ये स्टॉक नहीं लिया तूने, क्या किया यार, मैं तो कब से लेके बैठा हूं, दैट इज अ साइन मार्केट टॉप करने जी। वाला है। इफ यू नो समवन जो कभी बुलिश था ही नहीं, मार्केट टूटेगा टूटेगा, बट वो जाके बोलता है कि नहीं अब से मार्केट घूम जाएगा, दैट्स अ साइन ऑफ अ टॉप। देयर कैन बी मैनी इंडिकेटर्स, बट ये जो साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, इससे बेहतरीन सूची आई पर्सनली हैव नेवर राइट। एवर एक्सपीरियंस्ड। सो यस। पेटीएम आईपीओ, उसके पहले सम आईपीओ goes huge, and just see what has happened to these. When राइट। the exuberance is too much, when it यस। seems too stupid, too good to be true, that is exactly when you know. But इसको समझने के लिए ना, the problem that we all face, even I face, is that sensibility, that intelligence need to be greater than the emotion. जब आप ट्वीट देखते हो या न्यूज देखते हो कि किसी ने 2 करोड़ लगाया, उसका 12 करोड़ या 10-20 करोड़ हो जी। गया, एंड योर इंटेलिजेंस डजंट वर्क दैट वे, यू गेट कैरिड अवे, अरे नेक्स्ट ये आईपीओ 100% ऊपर खुला, ये आईपीओ 50% ऊपर किया, चलो नेक्स्ट वाला मैं ही लूंगा, बस वो 50% नीचे है। सो अभिजीत वो, या, look at the extreme emotions. So that's one. या, सो वही है अभिजीत की, कहीं ना कहीं हम सब अभिमन्यु हैं। हमें घुसना तो आ गया है, बट थमना या निकल जाना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि टू कंट्रोल योर इमोशंस, गेट आउट ऑफ इट, स्लो डाउन। आई थिंक दैट इज ये देयर इन। मार्केट आपको इतना वेरियस एंगल्स से पीटता है ना, इन द वेरियस वेरियस वेज से, वेरियस वेरियस नए नए तरीके निकाल के इतना भटकता है आपको कि मतलब आपका ये सीखना कभी खत्म ही नहीं होता है। बट हाँ, सी, स्टिकिंग ऑन टू डिसिप्लिन कि मैं इस प्राइस पे निकल जाऊंगा, इसके नीचे आएगा मैं निकल जाऊंगा, it is extremely important. I think I personally teach this in my classes also. I not teach exactly. Teach is, I don't think teach is a good word. If I say, Suchi, I'm going to teach you a lesson, this is not a very positive thing. Yeah. So whatever I share in the class, experience, knowledge, is that I think this is purely personal. मार्केट देखना चाहता है कि सामने वाला कितना प्रिपेयर्ड है और कितना डिसिप्लिन, कितना उसका करेज है और कितना उसका कमिटमेंट। आई थिंक दिस इज एनफ, आई थिंक दिस इज एनफ। बट वो मिलते मिलते, वो समझते समझते इतना हड्डियां टूटते हैं, इतना लॉस, स्टॉप लॉस हिट होता है कि इट्स यस। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। यस। अभिजीत एक क्वेश्चन और लूंगी मिस्टर मनीष का, मनीष कुमार जी का। उनको या बताइए कि एक एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं टाइम फ्रेम के साथ, कि कैसे? मत कीजिए आप। जो रैशनल, जो हाइपोथेसिस, जो कारण से वो स्टॉक पे एंट्री ले रहे हो, टेक्निकल हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका इंट्राडे हो सकता है, 3 दिन का ट्रेड होता है, 3 साल का ट्रेड हो, कुछ भी हो सकता है। You put in your best effort in entry, deciding on your entry point, and you expect, कुछ भी हो सकता है कि ये बाजार मुझे 5% भी दे सकता है, 500% भी दे सकता है। जी। So you trade based on the merit of your decision. मतलब you prepare well, you found out a stock to invest or you found out a stock to trade. It can be intraday tomorrow. कुछ लॉजिक के साथ तो लेंगे आप ना, अनाप शनाप तो जी। नहीं लेंगे। जी। जब वो लॉजिक घूम जाएगा, जब आपको लगेगा कि नहीं ये इनफ है, मेरे लिए इनफ है, ये लॉजिक घूम राइट। गया, तो आप निकल जाएगी। ये निकलना आपका एंट्री और निकलने के बीच में हो सकता है, वो 1% हो, 100% हो, 10% हो, -5% हो, बट द मोमेंट यू पुट इन, I will only take 5% profit, I will take only 10% profit, who knows whether this is standardized or not. Mathematically, if you go by maths over a long term, many number of trades, 1:1 is not going to get you anywhere unless you are like very, very good. Right? 80% of your trades are right, then makes sense.
But 1:1 will be like 50, tossing a coin. Right. Yes, the moment you do a little better than 1:1, towards 1:1.5, towards 1:1.2, maybe 1.3, then mathematically you are better off. But एक चीज समझे, I think Manish, हर एक बाजार 1:3, 1:4 नहीं देगा. जो जी. 2021 में दिया था, जैसा कमाने का मौका, स्कोप, विथ लेस एफर्ट दिया था, उतना कमाने का इस साल में या एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है. सो Hmm. व्हेन टाइम्स चेंज, योर एक्सपेक्टेशन शुड आल्सो चेंज. जो मिलता है ले लेते हैं, बिकॉज ये मार्केट में बैठने वाला मार्केट नहीं है. Hmm. सो द मोमेंट यू पुट इन अ फिक्स्ड रूल, यही है, you're gone. Right. I feel I so. think yes. Till the time your thesis is good, hold Yes. it. And Yeah. the moment the thesis turns it, get out of it. I think yes, that's work. So, Abhijit, there's one more question by Mr. Atul that खाली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग की जा सकती है. Yes. प्राइस एक्शन क्यों, आप कॉइन टॉस के भी ट्रेड कर सकते हो. आप टीवी खोलिए, कोई बाय बोल रहा है, बाय कीजिए. ट्रेडिंग इज व्हाट, टेकिंग अ डिसीजन टू बाय एंड देन टेकिंग अ रिवर्स डिसीजन टू एग्जिट. उसके जी. बीच में चार्ज भी आ सकता है, फंडामेंटल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं या कुछ भी ना आ सकते. आई जी. हैव इन माई एक्सपीरियंस हैव मेट सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जिनको फंडामेंटल्स टेक्निकल्स का कुछ भी नहीं आता. I, Suchi, I've personally met an uncle of one of my friend. Very desi guy, very simpleton. मतलब अंकल जी कैसे हैं, हाँ बेटा ठीक हूँ, यू अंडरस्टैंड. ही हाँ. हैज नो चार्ट्स, नो नथिंग, खाता, पेंसिल, पेन एंड द स्क्रीन. व्हेन आई से द स्क्रीन, द ओडिन स्क्रीन, द नीट बोल्ट वाला स्क्रीन, दैट्स जी. इट. He will just have a sense of the price. Then he has the experience. उनको उनको ये समझ है कि जब सब भाग रहे हैं तब आपको you have to, वो समझ है. And he used to treat so good. और हम ये सब चार्ट्स और ट्रेंड लाइंस और ये लैपटॉप और वो लैपटॉप लेके उनका आधा भी नहीं कर सकते थे. जी. राइट. सो एज आई सेड, एक यूनिकनेस डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस पैदा होता है. एंड ये एक दो महीने में, एक दो साल में नहीं बनता है. बिकॉज आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ मेंटरिंग. काफी राइट. यंगस्टर्स आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर कितने साल लगते हैं ट्रेडर बनने में. हम्म. राइट. कोई आंसर नहीं है. बट मैं अगर थोड़ा लॉजिकली बात करूं इसको, an equity market, bull market is around 4 to 5 years, like 3.5 to 4 years. The correction is around 1.5 years. So a typical cycle will be anyways 5, 6 to खींच के, अगर खींच के ले जाता है 7, 8 years. आपको 5 से 8 साल अगर आप बाजार में रहेंगे तो आपको एक ढंग का बुल मार्केट दिखेगा और एक उससे भी ढंग का बेयर मार्केट दिखेगा. तो आपको मार्केट कमा के देगा, सब निकाल देगा, आपको पटकेगा इधर उधर. फिर अगर आप टिक गए, मतलब 8 साल बाद अगर टिक गए, देन आई थिंक आपको समझ में आना चालू हो जाए. Yes, राइट. and in between all of these things, there should always be a urge, a need that I should do better. मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं खुद सीखना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, सेमिनार जाना, जो जिससे मेरा समझ मार्केट का, बट समझ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाए. अगर आप 8 साल पहले भी वही उठक बैठक कर रहे थे टीवी देख के ट्रेड, और 8 साल बाद भी आप टीवी देख के ट्रेड कर रहे हो, फिर आपका कुछ नहीं होने नहीं. वाला. अभिजीत, वीरानुज जैन जी का एक query है, how to be successful in intraday trading, and I think I would just like to tell them about your webinar जो आपने या intraday trading के लिए specifically ली है. So जी. Viranu ji, please log into elearnmarkets.com/expert/Abhijit Paul. You will see webinars on intraday trading specifically, and also smart support lock. I think if you want to know details about moving average strategies with respect to moving average, how to use them, when to exit, please visit the webinar done by Abhijit Paul on moving averages, and I think you will have it all. Do not miss out on the opportunity of getting a 40% discount on all webinars, which you will not get it otherwise.
40% webinars. I think the market is giving out discounts, so we also decided to give a good discount of 40% on webinars. So please make the most of it. And I would thank everybody, all our viewers, to be patient enough to be throughout the session. I hope you guys have liked it, and we'll see you all again next Thursday, right, Abhijit? Yes, I hope so. I hope they liked it. मैं बहुत straight बात करता हूँ, and I do not motivate people to make crores in the market. I just show them the reality. So I hope you understand. Right. Right. So I hope next Thursday we're joining back. Yes. Okay. Thank you All all. right. Thank you, Thank you, everybody. everyone. Bye bye.